Hello students, here we are going to discuss about the chapter number 26 of GK, that is about the extinct animals. Chapter number 26 is about extinct animal. Before this chapter we discussed endangered trees. At that time we discussed these two words, that is what do you mean by extinct and what do you mean by endangered. So recall that concept. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है और एंडेंजर्ड का मतलब क्या है. तो हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ दिस टू. एंडेंजर्ड मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या है, द स्पीसीज दैट फेस अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंड एक्सटिंक्ट मतलब दे आर ऑलरेडी हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दे आर नो मोर एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ. तो उसको बोला जाता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब स्पीसीज विच डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर ऑन दी अर्थ. दैट इज व्हाट द एक्सटिंक्ट स्पीसीज. ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटिंक्ट एनिमल, मतलब एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी गॉन डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस अर्थ. उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, मगर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्सटिंक्शन क्यों हुआ. ठीक है, व्हाट आर द मेन रीजंस और मेन कोजेज बिहाइंड द एक्सटिंक्शन. तो उसमें है ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कोज, जो कि दिस फॉरेस्ट आर एक्टिंग एज अ हैबिटाट्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. तो एज वी हैव कट डाउन द ट्रीज, forest has gone and due to lack of home these animals got died. Then pollution level, climatic changes, growth of invasive species. This thing we already discussed in science, that is chapter number 6, hunting of animals and natural disasters. These are the several reasons behind the extinction of animals. Now let us discuss the textual content. So here you are given the first one. Look at this picture. This picture is of Maua. This Maua was the species of the tallest flightless bird native to the New Zealand. It could grow up to a height of 12 feet and weigh approximately 230 kg. It was a source of food for the haast eagle. The Maoris were the original inhabitants of New Zealand. When they arrived in New Zealand, the bird became food for this human group. मतलब कि जो वो पर्टिकुलर एरिया में जो ह्यूमन रहते थे उसको बोला जाता है माओरिस. तो वो इंसान ये मावा को एज अ फूड यूज़ करते थे. सो ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग बाय ह्यूमंस ब्रॉड अबाउट the extinction of these massive birds around 600 years ago. मतलब उसका एक्सटिंक्शन का मेन रीज़न क्या है, ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग बाय द ह्यूमंस. अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया दैट दिस मावा वाज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द हास्ट ईगल. अभी ह्यूमन की ये इलीगल एक्टिविटी की वजह से मावा करके जो बर्ड है वो तो एक्सटिंक्ट हो ही गया. अभी इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सा बर्ड था, दैट इज़ हास्ट ईगल. वो इसके ऊपर डिपेंड करता था. मतलब दिस मावा वाज द फूड सोर्स ऑफ फूड फॉर दिस हास्ट ईगल. तो ये एक्सटिंक्ट हुआ, तो अल्टीमेटली विद इन फ्यू टाइम पीरियड दिस हास्ट ईगल हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटिंक्टेड फ्रॉम द अर्थ. तो आपने देखा लिंक देखी इन दोनों के बीच की. अगर आपने एक अगर एक्सटिंक्ट हुआ तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो भी तो मर ही जाएगा. सो दैट इज़ द थिंग. देन सेकंड वन इज दैट इज आयरिश अल्क. This animal is a giant extinct species of deer characterized by big size antlers. Antlers मतलब ब्रांच हॉर्न्स. आप देख सकते हो डायग्राम में कैसे उसके हॉर्न्स मतलब हॉर्न ब्रांचिंग दिख रही है हॉर्न्स में. It was almost 7 feet tall at the shoulders and could weigh approximately 680 kgs. The antlers could reach 12 feet and weigh up to 40 kg. मतलब ये वेट सिर्फ एंटलर्स की ही है. They lived in the ice age from the Ireland to Russian region. Hunting by people, climatic changes leading to change in vegetation,
that is not suitable for this animal's growth and development, and that is why we are in loss of this precious animal. Other than this climatic change, loss of habitat was also the one of the another reason behind this extinction. Loss of habitat due to human settlement were the major reason for their extinction. The last species died almost 11,000 years ago in the Ireland. Then next animal is that is woolly mammoth. This woolly mammoth is the animal that is an extinct relative of today's elephant. मतलब बहुत रिलेटेडनेस आपको ज़्यादा दिखेगी अभी के जो एनिमल्स एलिफेंट्स हैं ना उससे. They lived during the end of the ice age. They were covered in a thick fur coat and had 4 inches of fat for the insulation under their skin to keep them warm. They were herbivorous and ate mostly grasses, leaves, fruits, nuts, etc. Their tusks were very long, about 15 feet, मतलब के approximately 5 meters, and were used for fighting, defending and digging in the deep snow to find food. The height of this amazing animal could reach 11 feet and weigh almost 5,500 kg. Most of them became extinct around 10,000 years ago. Only a small population that lived in Wrangel Island, that is off coast to Siberia, until 1700 BC became extinct 4,000 years ago. मतलब complete extinction उसका 4,000 साल पहले हो चुका है. After that, next animal is Tasmanian tiger. This Tasmanian tiger is an animal was the carnivorous marsupial. Marsupial का मतलब क्या है? Mammal whose young ones are born undeveloped and are carried and fed milk in a pouch on the mother's belly like a kangaroo. कांगारू में आपने देखा है वो अपने मदर के पाउच में रहते हैं जो कि एब्डोमेन के साथ जॉइंट होता है वो पाउच. तो सेम वे ये एनिमल्स भी वैसे ही है और वैसे एनिमल को बोला जाता है मार्सुपियल. इट वॉज अ नॉक्टर्नल एनिमल विद द जनरल अपीयरेंस ऑफ लार्ज साइज डॉग एक्सेप्ट फॉर इट्स स्टिफ रिजिड टेल एंड एब्डोमिनल पाउच. यही सिर्फ डिफरेंस है. अदरवाइज वो नॉक्टर्नल एनिमल है जो कि उसका जनरल अपीयरेंस एक डॉग जैसा है, मगर सिर्फ उसकी टेल एंड उसका एब्डोमिनल पाउच उसको डॉग से अलग करता है. इट हैड लाइट ब्राउन फर विथ डार्क स्ट्राइप अक्रॉस इट्स लोअर बैक और इसी की वजह से उसको टाइगर बोला जाता है. दिस एनिमल कुड ओपन इट्स जॉज टू 120 डिग्री एंगल when faced with danger or while yawning. It could hop like kangaroos. The tallest animal of this kind could measure up to 9.5 feet including tail. The animal had habitat in Australia, Tasmania and New Guinea. They became extinct about 2,000 years ago due to excessive hunting by people who held them responsible for killing their sheep. The last non-existing animal died on 7th September 1936 at the Hobart Zoo, that is there in the Tasmania, due to being left out in the cold. Now let us discuss these animals which are given in the quiz. The first animal which you can see that is Smilodon. दैट इज़ स्माइलोडॉन. आपने वो आइस एज वाली जो मूवी थी उसमें ये मैमथ ये स्माइलोडॉन करके सारे एनिमल्स दिखाए हैं. ठीक है, तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत सारे एक्सटिंक्ट एनिमल दिखाए हैं जो कि अभी प्रेजेंट नहीं हैं अर्थ के ऊपर. दिस स्माइलोडॉन वन ऑफ द बेस्ट फेमस प्री हिस्टोरिक मैमल्स एंड बेस्ट नॉन एज साबर टूथ टाइगर. आपने उसके दांत देखे? ये देखो उसके दांत देखे आपने. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ टीथ इट इज़ नोन एज साबर टूथ टाइगर.
This is the animal which got extincted about 10,000 years ago. And what are the reasons behind its extinction? That is said to be the climatic change and competition with other species. But yet, exact reason is unknown. Then next animal is quagga. Quagga was a plain zebra that lived in South Africa until 19th century. This quagga are said to be the subspecies of zebra. Then third one is great auk. These are the flightless bird found on the rocky island of North Atlantic coast. And this flightless bird is said to be the extinct due to the excessive hunting. Then fourth one is Honshu wolf. This Honshu wolf is also said to be the Japanese wolf and said to be the subspecies of grey wolf. This Honshu wolf found on the island of Honshu, Shikoku and Kyushu in the Japan. This animal has become extinct in 1905, that is 1905, due to contagious disease like rabies. So this is what about the extinct animal. ये इसमें तो मतलब few examples are given and which we discussed, but other than this many examples of extinct animals are there which got extincted from the earth. अगर अभी भी जो भी एनिमल एट प्रेजेंट अर्थ पे है, दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम कंडीशन, मतलब उसको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं, मतलब दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. स्टिल वी डिडंट मैनेज देम प्रॉपरली, देन वी मे ऑल्सो lose them in near future. So we need to save them because they are also one of the important chain of food chain and food web, and meanwhile it is one of the important factors of ecosystem, or we can say nature. One more bird is there which is also extinct, that is the dodo bird. The dodo was an extinct flightless bird that inhabited the island of Mauritius. Though extinct, it is the national bird of Mauritius and its picture is used as a watermark on all Mauritian banknotes. I hope you understood how we are losing our valuable biodiversity that maintains the nature properly. For this chapter, you will be also given worksheet to solve the question answer related to the content of the same chapter. For that again you have to learn properly. So keep learning and thank you so much.